Good morning, everyone. Myself, Karma Mittal. I am here to discuss BCD arithmetic. In the previous video, we discussed BCD code. What do you mean by BCD? How to convert any BCD code into decimal, or how to convert any decimal code to BCD. So today I am going to start with BCD arithmetic. In this article, we will discuss the rules for BCD addition and BCD subtraction. Okay, so let's start with BCD addition firstly. So BCD addition. In BCD addition, two 4-bit BCD numbers A and B are being added. So in this, three different situation arises. First, case 1, when sum is equal to or less than 9 and carry is 0. Second case is when sum is greater than 9 and carry is 0. Third case when sum is less than equal to 9 but carry is 1. So let us consider first case with example. Let us understand. So suppose for example 8. First case is when sum is equal to or less than 9 and carry is 0. So let us consider example. Decimal value is first is 2, second is 6. First is 2, second is 6, and we have to add these two numbers. So 6 plus 2 in decimal is 8. So 8 is less than 9 and carry is also here. There is no carry. Okay. So now we will convert. Now we will do in BCD, and we will convert this decimal number into BCD. So 2 means 0010. 6 means 0110. Now we will add these two numbers. These are BCD. These are decimal number 2. So this is the BCD corresponding to 2, and this is the BCD number corresponding to 6. Okay. Now we will add 0 plus 0, 0, 1 plus 1, 0 with carry 1, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 0 with carry 1, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1. So this is the result of these two BCD number. Okay, ये आपका जो result है वो किस में है? BCD में. Now we can see in the result sum is less than 9 and carry is 0. Means if sum is less than or equal to 9 with final carry equal to 0, then sum is in proper BCD form and requires no correction. Means here this is the final answer. कि जब आपका सम लेस देन 9 और कैरी 0 है सम के बाद, तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपर बीसीडी में है एंड इट requires no correction. No correction. Right? Second case, when sum is greater than 9 and carry is 0. Sum is greater than and carry is 0 means we will take numbers like 7 plus 6. So 7 plus 6 should be 13 in decimal. Okay. So here answer is 13. So sum is greater than 9 here. Now we will convert this decimal number into BCD. So 7
means 0, 1, 1, 1. 6 means 0, 1, 1, 0. So BCD numbers are from 0 to 9. So 7 is in BCD range and 6 is also in BCD range. But addition of these two numbers is out of BCD. Is out of BCD. So it requires some correction here. So what will we do here? 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0 with carry 1. 1 plus 1, 1 0 plus 1, 1 1. तो 1 1 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे. 0 plus 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1. So in the after the addition of BCD number, after the addition of BCD number, we will get the result that 1101. So we can see BCD numbers are 0 to 9. So 1109 is not in the range of BCD number. So it is invalid BCD. It is invalid BCD. Invalid BCD. So result is invalid. But final carry is 0. Final carry is 0 here. Hence we have to correct the sum. The sum by adding decimal 6 or decimal 6 or BCD 6 6 के करस्पॉन्डिंग BCD क्या होता है 0 1 1 0 2 8 मीन्स सम में आपको क्या करेक्ट करने के लिए इस सम को इनवैलिड BCD को करेक्ट करने के लिए आपको इस नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा 6. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्यों हम ऐड करते हैं क्योंकि 0 to 9 आपके नंबर्स होते हैं उसके बाद A B C D E F 6 कॉम्बिनेशन होते हैं उसके बाद वापस किस पे चला जाता है 0 0 0 0 पे. तो इसलिए हम सम में क्या ऐड कर देते हैं 6 ऐड कर देते हैं. तो आपका जो इनवैलिड BCD है वो BCD वैलिड BCD रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाता है. लेट्स सी invalid BCD क्या था आपका 1101. Now we will add 0110 to correct invalid BCD into BCD result. 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 0, 1 plus 1 0, and carry is 1. Carry is 1 here. 1 plus 0 1, 1 plus 1 0 with carry. Now this means 3, this means 3, and this one means 0 0 0. So it will be equivalent to 1 3. So this is the final answer. 1 3 is the final answer. ठीक है. इधर 13 डेसिमल में 13 आ रहा है तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि BCD को ऐड करने के बाद आपका क्या आना चाहिए था 13 आना चाहिए. तो यहाँ पर लेकिन क्या मिला 110 जो क्या होता है D. तो D आपका या 12 1101 means 13 and D and or 13 are not in the BCD number. So we have to correct it by adding 0110 in this sum. So we will add here 0110 in with 1101. So we will get 0011 or 0001 and it will be equivalent to 13. So this is the final answer. Okay. Now case 3, then sum is greater than sum is less than or equal to 9 but carry is equal to. सम तो आपका लेस देन 9 है बट कैरी क्या है आपकी 1 है. तो वो केस कैसे अराइज होगा. सपोज 9 प्लस 8. तो देखो 9 भी आपका BCD होता है और 8 भी आपका BCD होता है राइट. तो ये कितना आना चाहिए हमारा 17 आना चाहिए. ये हमने डेसिमल दिया है डेसिमल वैल्यू राइट. अब 9 का BCD हम BCD एडिशन कर रहे हैं तो 9 को हम BCD में कन्वर्ट करेंगे तो 1001. 8 को BCD में कन्वर्ट करेंगे 1000. Now you will add these two numbers. 1 plus 0
1, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 1 plus 1, 0 with carry 1, with carry 1. So this is the carry, but 0001 is less than 9, less than 9. In this case, we have to add, means ये जो रिजल्ट है आपका क्या आया, 000001, अगर आप यहाँ 0001 लिखोगे या 0001 मीन 11, so 0001 0001 11, so it is invalid result, incorrect BCD result. This is incorrect BCD result. रिजल्ट क्या आना चाहिए था आपका 17. So what will we do now? We add 6 to incorrect BCD result. Incorrect BCD result. तो सम में आप इनकरेक्ट बीसीडी में, इनकरेक्ट बीसीडी जो आपका जो ये रिजल्ट आया आप उसको कैसे लिखोगे, कैरी को 1 को 001 और ये क्या है आपका 000, मीन्स आप 1 को, इस 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे. 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पैडिंग करनी होगी, मीन्स 3 zeros आप आगे ऐड कर दोगे. तो ये आपका कैरी वाला 1 हो गया और ये आपका जो रिजल्ट आएगा 001 वाला ये 1 हो गया. अब इस रिजल्ट में आपको क्या ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, 6. तो 6 क्या होगा 0110 और इसके साथ तो आप 0 ही लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0. So it will be equivalent to 1, it will be equal to 7. So this is our final answer. 17 आपका यहाँ पे डेसिमल में आंसर आना चाहिए था, तो ये हमारा वैलिड रिजल्ट. Okay. Now in the next video we will discuss BCD subtraction. Thank you. If you like my video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.